आज कॉर्पोरेट आर्ट पे अब हम फोकस करते हैं। टाटा केमिकल्स आज एक्चुअली अच्छा खासा यहाँ पर एक्शन भी दिख रहा है, स्टॉक में जबरदस्त तेजी है। आप जानते हैं कंपनी 1939 में शुरू हुई थी, 26,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का और टाटा ग्रुप का हिस्सा है। सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की दुनिया में दिग्गज यहाँ पर ये कंपनी है। कंपनी के पास भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, केनिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने गुजरात में लिथियम आयन सेल यूनिट लगाने का ऐलान किया। ऑब्वियसली इससे टाटा केमिकल्स का क्या यहाँ पर रोल होगा, किस तरीके का फायदा होगा, क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, इस पर डिटेल्स जानेंगे और आगे किस तरीके का आउटलुक है बिजनेस को लेकर, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी कंपनी के एमडी एंड सीईओ आर मुकुंदन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले जो हाल ही में ये खबर 13,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो टाटा ग्रुप करने जा रहा है, बिकॉज ये लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर गुजरात में जिसकी बात हो रही है, टाटा केमिकल्स का यहाँ पर क्या रोल होगा? थैंक यू वेरी मच स्वाति। आई थिंक ये जो अनाउंसमेंट है ये सेपरेट इंडिपेंडेंट कंपनी है, अगरतास स्टोरेज सिस्टम्स लिमिटेड, उन्होंने साइन किया है जो टाटा ग्रुप के अंदर है। तो दे आर गोना बी मेकिंग 20 गीगावाट्स ऑफ बैटरी फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, दैट इज व्हाट दे हैव सेड. And we have maintained that we are only focused on chemicals. And if we do get into some of these battery related chemicals, we'll make the announcement at the appropriate time. As of now, this is a very independent news. I just wanted to highlight that. Okay, lovely sir. ये clarification important था क्योंकि लिथियम आयन की बात हो रही थी तो हम समझना चाह रहे थे केमिकल्स का यहाँ आपने समझाया। सर किस तरीके का आउटलुक लग रहा है, डिमांड ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं, क्या ट्रैक्शन वापस है मार्केट में, प्राइसेस किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं, ओवरऑल एक ट्रेंड समझने की मैं कोशिश करना चाहती हूँ बिजनेस को लेकर इस वक्त। देखिए ब्रॉडली ट्रेंड देखा जाए तो ग्लोबली व्हेन यू सी ट्रेंड्स आर ऑल पॉजिटिव. I think the big issue is that I think the growth in India is especially very, very positive for the world economy. We had anticipated एक चीज ये थी कि चाइना का reopening will be very strong, but China reopening has been slightly more muted than what we anticipated. And otherwise, every other part of the world, the demand growth and demand push is fairly strong and robust. I think that is really the overall context. In terms of the specific products we make, I think every product we are seeing continuity of demand issues. There are some pockets jahan pe inventory has increased a little bit, because of which there are some pricing pressures which have come in the market. But otherwise, if you overall take that the cost also has come down, I think the margin is more or less range bound, as I call it, in most of our products. So that's where we are. So overall, if you take a 3-year horizon or 2-year horizon, I think the products we are in, they are all linked to sustainability, which means जो काफी ज्यादा जो growth हमको मिलता है, हमको दिख रहा है, वो solar glass, lithium battery storage उसमें दिखता है, क्योंकि the chemicals which we make are all used in that to make glass as well as to make lithium carbonate, which for every ton of lithium carbonate you need about 2 tons of soda ash. So broadly we are fully aligned in terms of what we see as a growth segments driving the demand. And overall I would say that the good pockets of demand are all over. In fact, the positive has been that Europe, which we thought will come under serious pressure, has coped with the whole situation very well. So we see broadly positive outlook, but there are also some pockets where inventory buildup has happened, especially in China. श्योर, सो ओके, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग और डिसेंट आउटलुक दिख रहा है, लेकिन हमें कॉशियस रहना है। चाइना फॉर एग्जांपल अभी भी म्यूटेड है, आपने बताया। सर यू वर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टनेस इन प्राइसेस, और प्राइसेस अगर हम देख रहे हैं, कट्स देखे गए हैं 3 to 4% इन डोमेस्टिक मार्केट फॉर 2 consecutive months. अब आपको लग रहा है यहाँ पर प्राइस कट्स और होने पड़ेंगे, या ये यहाँ पर स्टेबल होकर फिर वील स्टार्ट सीइंग अ ट्रेजेक्टरी अप? See, I think broadly the margin is more or less range bound. I think many of this are because the shipping rates have come down. So the cost of transportation from overseas markets has come down, as well as the whole issue related to energy has come down. Energy costs have come down. So all manufacturers are having a lower cost structure than what it was before. So some of that is going into the market. Secondly, I think as far as
the domestic business is concerned. More than anything else, I think the China overhang a little bit with respect to the inventory buildup there, which went up sharply from something like 100,000 ton to 300,000 ton, has put a bit of pressure in the Asian market. And we think in the long run, it'll ease itself out. There is also new supply coming in the market in China of 1.5 million ton, which should get absorbed during the year. So I think this is, in my view, a temporary adjustment phase which the business is undergoing. And we'll have to manage our way through this. But if you look at other pockets, I think other than Asia, I think they continue to remain and continue to hold their ground as we speak. ओके श्योर. सो चाइना को छोड़ के बाकी जगह इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं यही जानना चाहती हूँ, आपने कहा था मार्जिन्स ब्रॉड बेस्ड रहेंगे, बट जस्ट गिव मी अ सेंस क्या रेंज की हम बात कर रहे हैं दैट इट विल बॉइल डाउन टू, कीपिंग द चाइना फैक्टर इन माइंड सर? So I think if you look at our last quarter number, or broadly, I think it may range between 1 or 2%, range around that only. I think it is either it's going to be 1 or 2% below or 1 or 2% above in some of the. So some of our businesses which are, let's say, in US, and they would do better than what our last quarter margin was. Europe and Kenya are going to be low. We had actually stated that mainly because they had exceptional margin because of some of the energy hedges they had done, and that hedge has gone away. And India, it may be 1 or 2% down from where it is because of the pressure on inventory. So overall, I think if you look at the company, I would say its margin percentages will be range bound as we speak in terms of the last quarter. ओके श्योर. सो ये तो रहा आउटलुक मार्जिन्स पर. सर, रिपोर्ट्स बता रही थी कि सप्लाई ऑफ सोडा एश विल बी इंक्रीज्ड इन इनर मंगोलिया. क्या अपडेट है सर वहां पर? That's correct. I think the capacity is coming on stream. There are conflicting reports whether it is 1.5 million ton or 5 million ton. Our view is 1.5 million ton will certainly is coming into the market, and this will certainly put pressure on some of the Chinese suppliers. And we do anticipate it will get absorbed in about 12 to 18 months' time. The additional 5 million ton is a big question. I think we are all watching that space, whether it is 5 million ton or 1.5 million ton. I think the clarity will emerge in about 3 to 4 months' time, and much more clearer signals will be available. ओके 3-4 महीने लगेंगे टू अंडरस्टैंड वेदर इज 1.5 और 5, बट फिलहाल ये लग रहा है कि 1.5 मिलियन ही यहाँ पर अपडेट है. क्विकली सर, एक्सपेंशन के पॉइंट से मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का कैपेक्स लाइंड अप है, कहाँ पर एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं, वेयर यू वांट टू स्केल अप सिग्निफिकेंटली, ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम एक्सपेक्ट करेंगे, इन व्हाट स्ट्रीम्स, इफ यू कैन जस्ट ब्रेक दैट अप फॉर अस सर. See, we had highlighted that in Mitapur, 200,000 tons of soda ash will come additional somewhere during the middle of this year. So we do expect 100,000 ton additional for the full year because only 6 months will be available. Salt will go up by also another 200,000 ton. I think this capacity is coming on stream in a month or two, and will be fully operational from the second half. The additional expansion, which is beyond the 200,000 ton, about 400,000 ton is happening in US, and about 100,000 ton is happening in Kenya. So overall, I think if you look at our current plan, another 300,000 ton is also being planned in India, which should come on stream in about 18 months' time. About 1 million ton additional capacity will be there, in addition to the 200,000 ton, which is getting commissioned this year in soda ash in about 18 to 24 months. That's broadly the plan which we have. ओके श्योर. तो ये ब्रॉड प्लान है जो जिस पर आप यू आर वर्किंग ऑन. क्विकली सर, वी वर जस्ट सीइंग कि आपने नेट डेट रिड्यूस किया है बाय ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपीस कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखते हैं, तो आगे क्या प्लान है डेट रिडक्शन को लेकर? So we'll continue to reduce our debt, and our plan is to, Magadi is already debt-free, India is debt-free, as well as we would try to at least make US also debt-free in about 18 to 24 months. And we want to get to a zero debt position while even managing the growth. That is our objective.
and we will continue to engage in very, very prudent balance sheet, which has been our approach. It's come out, ये सही भी रहा है because interest rates have increased. So I think more watchful approach in terms of debt has really helped the company. ओके सो ये डेट रिडक्शन प्लान आगे कंटिन्यू होता रहेगा. एक आखिरी सवाल सर, जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आप देखते हैं और बाहर के मार्केट्स में, सिंस आपकी ग्लोबल स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर M&A अपॉर्चुनिटीज़, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ आर यू लुकिंग आउट फॉर? कौन से नए मार्केट्स में आपको लगता है इस वक्त अच्छा एक एंट्री हो सकती है जहां आप अभी तक नहीं है? उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड रीच बढ़ाने के लिए कुछ आप काम कर रहे हैं सर? Actually, if you really look at it, while US is a great place to produce chemicals because of the low cost structure, the best growing market is India, and I think we are really focused on servicing the demand for the Indian market. In India, we do believe that chemical sector will more than double in the next 7 to 8 years broadly, and I think we want to play a role in that. So we're looking at opportunities within India, and India also will be a very cost-effective export base. So really, a lot of our focus will continue to be in India, and also the other competitive production base we have is in US. So I think it is going to be a combination of India and US. ओके सो इंडिया क्लियरली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फोकस वहाँ पर रहेगा, एंड यूएस ऑफ कोर्स बीइंग अ इम्पॉर्टेंट मार्केट दैट विल कंटिन्यू. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मुकंदन हमसे जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, बताने के लिए आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी देख रही है और क्या है आउटलुक. वेल